let's start with chapter number 5, human resource. So the concept of human resource is relatively modern one, emerging in the mid-20th century. In this chapter, we will explore the idea that like other resources, human are considered valuable assets rather than liability. So we can say that they have unique ability to harness knowledge, skills and technology, जिससे वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को किसमें ट्रांसफर करता है, वैल्यूएबल रिसोर्स, राइट. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज डिस्टिंग्विश्ड ऑफ ह्यूमन फ्रॉम अदर through cultivation, construction and powered human other resources, industrialization, infrastructure development, we turn raw land into productive resource. The key point to remember that not all humans are viewed as resource, only those possess the capacity and capability to generate something valuable in the society. So human resource, they are not evenly distributed across the globe, they are dynamic, meaning changing over time. Now let's study about the sex composition. So it is one of the fundamental demographic characteristics of the population, right? So a ratio above 1,000 indicates higher number of females and the ratio below the indicates a lower number of females, right? We have 105 females per 1,000 male, while Haryana has the lowest ratio. आपका 877 females है on 1,000. Now age composition, young मतलब 0 to 5 years. Categories include children below 15 years of age who are economically unproductive. और वो किस पे डिपेंड होते हैं, अपने पेरेंट्स पे, जो उनकी नीड्स होती है, फूड, क्लोथिंग वगैरह सब किस पे डिपेंड होते हैं, पेरेंट्स पे. अडल्ट 16 to 59, ये किस कैटेगरी में आता है, एक्टिव पॉपुलेशन. इंडिविजुअल क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव होते हैं, दे आर जनरली मोबाइल एंड दे प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर्स हुज एज ग्रुप इज इकोनॉमिकली. Like we have states like United States, Canada, France, Germany. यहाँ पे significant जो percentage of the population है वो कितनी है, 67%. Age 60 and above जो किस पे डिपेंड होते हैं, अपने बच्चों पे, they are unproductive. और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं. Now age sex pyramid, what it is? It is graphical representation जो population characteristics है, जो both age और sex composition को दिखाती है. जो bars in the graph they are arranged horizontally with the side representing male and other female. इसमें 5 to 9 years. Now distribution of population. So population distribution refers to how people spread across the earth surface. जो global population है, आप देखेंगे वहाँ पे significant growth हुआ है recent decades. 2000 में वो 6 billion हुआ and 7 billion 2011 and now 8 billion by 2025. Right, so we can say that 60% of the global population is concentrated in only 10 countries, जिसमें आपका चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, रशिया, जापान आ जाता है, राइट. एंड चाइना, इंडिया क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री, राइट. डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज ऑफ्टन डिफाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते, वो क्या है, डेंसिटी. द एवरेज ग्लोबल पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैंड्स एट 51%. Right, we have in Europe a significant portion of the population that reside in urban areas. Highly populated European countries include France, Germany, Belgium, Netherlands, Luxembourg. Average population density is 382% per square kilometer. The 5 most densely populated states in India: Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Andhra Pradesh. Now, factors influence the distribution of and density. पहले हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं, तो इसमें आपकी टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और मिनरल आ जाते हैं. सो इफ इट अबाउट टोपोग्राफी, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं. प्लेन एरिया में आपको ज्यादा लोग दिखेंगे यहाँ पे क्योंकि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो, और हिली एरिया में आपको लेस कंड्यूसिव टू हैबिटेशन. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू डू एग्रीकल्चर ओवर. क्लाइमेट की अगर हम बात करें, जहाँ पे हायर पॉपुलेशन होगी वहाँ पे एक्सट्रीम और हॉट क्लाइमेट होगा. फेवरेबल क्लाइमेट इन टेम्परेट लैंड्स देन लाइक नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन कंट्री. ये टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ये सीवियर टेम्परेट रीजन है. फॉर एग्जांपल पॉपुलेटेड एरियाज वाइल सहारा डेजर्ट एंड द पोलर रीजन इन कनाडा एंड रशिया, दे रिमेन स्पार्सली पॉपुलेटेड. यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है. सॉइल की बात करें, फर्टाइल सॉइल यहाँ पे होती है, जैसे आपकी रिवर वैली होगी, इंडस, मेसोपोटामिया, यहाँ पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. वहीं अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम दिखाई. इफ वी टॉक अबाउट वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर ज्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा, ज्यादा अवेलेबल होगा, बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डेली नेसेसिटी. तो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी इजिली अवेलेबल होगा, वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया.
राइट. मिनरल्स की अगर हम बात करें, रीजन विद अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्स लाइक मिनरल टेंड टू अट्रैक्ट पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई, एज द डिस्कवरी ऑफ दिस रिसोर्सेज लीड्स टू माइग्रेशन. नाउ कल्चरल फैक्टर्स. व्हाट आर कल्चरल फैक्टर्स? लाइक वाराणसी इन इंडिया एंड वेटिकन सिटी इन रोम, ये डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से. इकोनॉमिक फैक्टर जो है, इट मीन्स दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड, दोनों क्या करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. जहाँ पे लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी. लाइक वी हैव पुश फैक्टर दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन एंड देन वी हैव पुल फैक्टर, मतलब एज बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों क्या करेगी, इंप्रूव लिविंग कंडीशन को दूसरे रीजन में अट्रैक्ट करेगी. भाई लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं जॉब करने के लिए. सोशल फैक्टर, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, जहाँ पे हाउसिंग अच्छी होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी. नाउ पॉपुलेशन चेंज, इट इज अ कांस्टेंट मोशन, राइट. वी कैन से इन distribution of people we call this population change. So until 1800 global population grew slowly and steadily. This is because of two main factors, high birth rate and high death rate. So we in 1804 world population reached 1 billion. 1959 में it's exploded. In 1990 40 years later population क्या हो गई थी, डबल हो गई थी. कितने हो गए थे, 6 billion. Now components of the population change. What are its components? Birth rate, number of lives, death rate, number of people died. नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. देन व्हाट इज माइग्रेशन फैक्टर, जो इफेक्ट करता है नॉट ओनली ग्लोबल पॉपुलेशन बट उसके साथ साथ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री. वी हैव इमिग्रेशन, आउट माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड नेशनल माइग्रेशन. जब लोग क्या करते हैं, अपनी होम कंट्री को छोड़ते हैं, वो आउट माइग्रेशन होता है. जो परमानेंटली एंटायर न्यू कंट्री में चला जाता है वो इन माइग्रेशन होता है. नेशनल माइग्रेशन मतलब बॉर्डर्स पे जाना. Now patterns of population changes. So the growth of the world population is not uniform. Some countries like Kenya experience high population growth due to both high birth and death rates. Indian population is still growing. आप देखते हैं अब भी grow कर रही है. Even with declining birth rate and death rate, sheer number of added substantially. Countries like UK have slower population growth due to low birth rate and death rate. Population composition का मतलब क्या होता है? It's a structure of population जो vital होता है for viewing countries people as resource. जैसे आपके वेरियस एस्पेक्ट्स हो गए, सेक्स रेशियो हो गए, एज कॉम्पोजिशन हो गया, एज सेक्स बराबर, राइट. दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.